class, the next day Mr. Jimmy examining the roll found me marked absent. So that day Gandhiji was late due to as the cloud deceived him. When he reached at school, all the students departed from the school from gymnastic class. The next day, when Mr. Jim examined the roll found me marked absent. The roll examine करचंदी headmaster सेतल देखचंदी he become absent. Gandhiji become absent for gymnastic class. Being asked for the reason of absence, then he asked why I was absent on that day. He asked me, Mr. Jim asked Gandhiji why he was absent on that day. I told him what had happened. So Gandhiji told him what had happened, that he was deceived by the cloud as he didn't have any watch, so he did not know the time. He refused to believe me, but the word told by Gandhiji was not believed by Mr. Jim. Gandhiji जो word कहले, Gandhiji जो कथाटा कहले सेटा को Mr. Jim believe कले नहीं. Believe me and ordered me to pay a fine. आउ किंतु गांधीजी को से कौन कले फाइन कर देले से क्लास रे absent करथिबार of 1 or 2 anas 1 or 2 आना बेली जतला हमर आना को चलथिला तनु सेति कि ताको फाइन कले से क्लास रे absent हेतिले बेली. I was convicted of lying. So Gandhiji कहउछन मु दोषी हेली मिछ कहिथिबार. I was convicted of lying that deeply pained me. जोटा मते बहुत कष्ट देइतिला जे मु सत कथा कहितली किंतु मते एचएम भाबिले जे मु मिछ कथा कहिछ आ मते दंडित कले जोटा मते बहुत कष्ट देइतिला. How was I to prove my innocence? मु केमिति मोर इनोसेंस टाको मु केमिति मोर माने सत कथाटा को प्रूव करिवि मु सेटा जानि पारली नै. There was no way सेटी बाटो भी किछ नै मु मोर इनोसेंस टाको प्रूव करिया पे. I cried in deep anguish. बहुत कष्ट होला मु कांदिबा को लागिले. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. तेणु से देखिली गोटे man of truth should also be a man of care. तेणु गोटे सत कहूथिबा लोक शुड सब बेले गोटे केयरफुल भी हवा दरकार. खाली सतटा एसेंशियल नो ता सहित केयरफुल हवा दरकार. सेठी मु रियलाइज कली. This was the first time and last year. This was the first time एटा ही प्रथम थर थिला and last instance of my carelessness. मोर carelessness रो last instance कहले example. तेणु मोर carelessness रो एटा last example. माने या परठु मु केबे careless हेइनी. In school I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. I had a faint recollection. तापर मोर मने पडुची गोटे faint recollection माने सेटा ठीक से मु मने पकई पारुनी. That I finally succeeded in getting the fine remitted. तापर मु finally success हेली जे मते फाइन टा छाड़ कराला. Fine remitted. The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. The exemption from exercise was तेणु exercise रु मते ताको फ्री मिली गला. exercise was of course obtained सेटा से हासिल कले. केमती हासिल कले ना आज माय फादर रोट हिमसेल्फ. गांधीजी को बापा लिखिकी देले हेडमास्टर पाखु. आज माय फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर पाखु लिखिकी देले सेइंग दैट ही वांटेड मी एट होम आफ्टर स्कूल. तेणु मु केमती चाहूची जाई कि घरे जाई मो बापा को सेवा करिवि एई सब जिंस ताको बापा लिखिकी देले. तापर मते कोन कराला ना जिम्नास्टिक क्लास बा से जो एक्सरसाइज क्लास रु मते माने एक्सक्यूज मिल गला. आ से क्लास मते करिया को पड़लानी. बट दो आई वाज नॉन द ओर्स ऑफ हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज. But though I was known the worse for having neglected exercise. जदि बा मु नेग्लेक्ट करनोतले एक्सरसाइज किंतु मोर इच्छा नथिला. I am still paying the penalty of another neglect. पुणी थरे कोन होला मते आ गुटे नेग्लेक्ट पई पेनाल्टी दबाकू पड़ला. मते आ गुटे नेग्लेक्ट पई फाइन दबाकू पड़ला. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. I don't know whence I got the notion. मु जानिनी केतबेले मो पा गुटे नोशन आस्तला बा केतबेले मो पा गुटे चिंताधारा मोर पळै आस्तला that good handwriting was not a necessary part of education. एजुकेशन रो गुड गोटे नेसेसरी पार्ट हैंडराइटिंग नुहे बेली ए नोशनटा मो मुंड को केमिति आस्तला मु सेटा जानिनी. तेनो मोर नोशन थिला नो नीड ऑफ गुड हैंडराइटिंग इन एजुकेशन. But I retained it until I went to England. किंतु मैं एटा रियलाइज कली. I retained it until I went to England. जेतले मु इंग्लैंड को गली. Until I went to England when later especially in South Africa. तापर केतले ना जेतले साउथ अफ्रीका गली सेतले मते मु से जिनटा को रियलाइज कली. I saw the beautiful handwriting of lawyers. सेठी केमिति रियलाइज कले ना सेठी जो लॉयर मानक सते जाई प्रैक्टिस कले सेठी लॉयर माने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग रे लिखतांती. I saw the beautiful handwritings of lawyers
एंड यंग मैन बॉर्न एंड एजुकेटेड इन साउथ यंग मैन जो मैंने साउथ अफ्रिका जन्म होता साउथ अफ्रिका शिक्षित होते से सुंदर हैंड रईटिंग लिखुते से मुझे देखिली आई वाज आसेम्ड ऑफ माई सेल्फ तेणु यहाँ देखला पर मत बहुत लज्जा लगे आई एम आसेम्ड ऑफ माई सेल्फ तेणु मतलब बहुत खराब लगे आसेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट आउ मो हैंड रईटिंग जो नेग्लेक्ट करी जो हैंड रईटिंगटा एजुकेशन एसेंशियल नुह बोली जो नोशनटा मोर थिला सेठी मु रिपेंट कली फर्स्ट टाइम जे मु केते बड़ मिस्टेक करिछि I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. से realize कले जे bad handwriting गोटे sign होउछि कोन ना जे बेले भाबे गोटे imperfect education means गोटे proper education हासिल करा जायनि बोली बुझा जिवो जदि गोटे स्टूडेंट पाखरे bad handwriting थाए imperfect education. I tried later to improve mine. तापर मु चेष्टा कली मोर handwriting को improve करिया पे. I tried later to improve mine. But it was too late. किंतु सेतलो बहुत लेट हेतला. But it was too late. But it was too late. I could never repair the neglect of my youth. मो यूथ समय जो नेग्लेक्ट मु करितली मु सेटा को रिपेयर करि परली नाही आज टाइम हैड ऑलरेडी पास्ड. Let every young man and woman be warned by my example. तेणु मु एठी कहूची प्रत्येक young man और woman मोर एग्जांपल वार्न हबा दरकार से माने समस्त सतर्क हबा दरकार warned by my example and understand that a good handwriting is a necessary part of education. आउ से माने समस्त बुझिबा दरकार जे good handwriting is a necessary part of education. शिक्षार गुड हैंडराइटिंग होची गोटे नेसेसरी पार्ट आमे जेते एजुकेट हेले जदि हमर गुड हैंडराइटिंग नथिबो ताले नो वन कंसीडर अस एज ए गुड स्टूडेंट तेणु आम गुड स्टूडेंट हिसाब से कंसीडर हवा कले आमर हैंडराइटिंग गुड हवा दरकार बोली गांधीजी नेक्स्ट जेनेरेशन पे कहउछन्ती समस्त मोठो एटा सिखिबा दरकार. One by example and understand that good handwriting is a necessary part of education. I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing. तेणु मोर बर्तमान ओपिनियन होची चिल्ड्रेन शुड फास्ट लर्न द आर्ट ऑफ ड्राइंग. पिला माने प्रथमे सिखिबा दरकार ड्राइंग केमते करा जिवो आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग टू राइट. लेखिबा पूर्व से ड्राइंग करबा सिखिबा दरकार बिफोर लर्निंग टू राइट. लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन. आउ चाइल्ड गोटे लेटर लिखिबो लेटर सिखिबो केमती ना बाय ऑब्जर्वेशन माने से ऑब्जर्व करिकि निजे सिखिके लिखिबो. नो नीड टू टॉट इट ता किछि पढेबा दरकार नै से तार ऑब्जर्व करी जदि ड्राइंग जानिथिबो से ऑब्जर्व करी निजे हैंड राइटिंग लिखि परिबो बाय ऑब्जर्वेशन. एंड ही टच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट मध्ये ड्रा करि परिबो. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लावर्स बर्ड्स ए सुडा से ड्रा करि परिबो एक्सेट्रा. एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज लर्न द ड्रॉ. तापर ताकू आमे अलाउ करिबा हैंड राइटिंग सिखिया पे जेतले से ड्राइंग करिबा सिखि जिवो जेतले से विभिन्न ऑब्जेक्ट ड्राइंग करिबा सिखिबो तापर आमे ताकू अलाउ करिया कोन करबा ना लेटर सिखिया पे. एटा गांधीजी ताको ओपिनियन दउचोंदी. एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज लर्न टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स. ही विल देन राइट ए ब्यूटीफुल फॉर्म द हैंड. तापर ही से कोन करिवो ना गोटे ब्यूटीफुल वे रे लिखि परिबो तार हैंड राइटिंग ता ब्यूटीफुल हे परिबो. Sanskrit, then another incident he told about his school career. Sanskrit, however, proved a harder task. Then Sanskrit भी गोटे harder task ताको पैंका थिला. गोटे harder task. In geometry, there was nothing to memorize. Geometry किछि memorize करिवार नथिला. Mathematics रे किछि memorize करिवार नथिला. Whereas in Sanskrit, I thought everything had to be learnt by heart. किंतु संस्कृत रे मु देखिली सबु जिंस को by heart learn माने सबु जिंस को memorize करिया पड़ियो सबु जिंस को घोषिकरी मन रखिया को पड़ियो बोली गांधीजी कहउछन मु रियलाइज कली. This subject was also commenced from the 4th standard. आ एई सब्जेक्ट आ सेतले को क्लास रे जतला ना 4th standard रो मध्य आ जाइतला ए सब्जेक्ट आ संस्कृत सब्जेक्ट. As soon as I entered the 6th, जेतले गांधीजी एंटर कोचुनी 6th स्टैंडर्ड रे, as soon as I entered 6th, I became disheartened. माने मो मन दुख होइला. I became disheartened. The teacher was a hard taskmaster. संस्कृत टीचर जेतले गोटे hard taskmaster माने भारी एंग्री थिले, भारी रागी थिले. hard taskmaster. Anxious as I thought, से गोटे ताकर गोटे इच्छा थिला, ताकर डिजायर थिला. As I thought to force the boys, से boys मानो फोर्स करथिले, to force the boys. There was a sort of a rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teacher. आ स्कूल रे गोटे rivalry थिला, गोटे एनिमिटी रहउतला का भीतर ना संस्कृत टीचर आ पर्शियन लैंग्वेज टीचर को भीतर गोटे एनिमिटी रहितला, rivalry भीतर रहितला ताको भीतर. The Persian teacher was lenient. आ पर्शियन टीचर जन को बहुत काइंड थिले, बहुत सोबर थिले, से पिला मान को बहुत जेंटिली हैंडल करथिले, lenient.
The boys used to talk among themselves that Persian was very easy. So boys माने जितले affection पाउतले टीचर तेनु समाना भाबिले जे Persian language themselves that Persian was very easy and the Persian teacher आउ Persian teacher भी बहुत भलो बोली students माने चाहुतले was very good and considerate to the students आउ से student मानक प्रति मते बहुत कॉन्शियस है student मानक को बहुत भलो पाउतले student मानक को से by heart भलो पाउतले के Persian teacher the easiness tempted me and तेणु easiness तेणु पर्सियान लैंग्वेज जो easiness जो सहज बोली शुणिली बा सहज लागिला tempted me मो मन भीतर मते इंटरेस्ट पड़ेला tempted me and one day I sat in the Persian class तेणु से temptation जो मु दिने जाके बस पड़ली कोठी Persian class रे जाके दिने बसली I went to the Persian class the Sanskrit teacher was grieved Sanskrit teacher मन भारी दुख कला the Sanskrit teacher was grieved he called me to his side se gurudana dakile called me to his side and said how can you forget that you are the son of a Vaishnava father तुम केमती भूली गलो तुम गोटे वैष्णव संप्रदायर बापांकर पुओ बोली तुम केमती भूली गलो मो संस्कृत टीचर डाकी मते एटा कहले won't you learn the language of your own religion तुम निज रिलीजन लैंग्वेज तुम लर्न करबनी तुम निज रिलीजन लैंग्वेज तुम शिखिया पे इच्छा होनी if you have any difficulty जदि तुमर किछि डिफिकल्टी रहउची why not come to me काहे मो पाक न आछो why not ask me मते काहे न पचारुछो I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability तेणु मु चाहूँ स्टूडेंट मान को संस्कृत शिक्षा देवा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी माने मो पाखरे जेतिकी दक्षता अछि सब दक्षता को यूज करके स्टूडेंट मान को संस्कृत टीच करिया पे मु चाहे as you proceed further you will find it in things of observing interest as you proceed जते जते तुम इंटरेस्ट नबो पढिया पे संस्कृत रे आग्रह करिवो you will find in it things of observing it तुम सेतले तुमको इंटरेस्ट लागिवो संस्कृत बहुत सहज लागिवो you should not lose heart सेतले तुम मन दुख होबनी you should not lose heart माने हार्ट लूज माने मन दुख होबनी आ तुम डिसअटेंड होबनी come and sit again तेणु आसो पुणी संस्कृत क्लास रे बसो come and sit again in the sanskrit क्लास तेणु संस्कृत टीचर गांधी जी को डाकी के बुझेले come and sit again in the sanskrit class the kindness put me to shame तेणु संस्कृत टीचर जो काइंड वे मते बुझेले the kindness put me to shame मते बहुत माने बहुत लज्जा लागिला जे मु काहे के एतो बड़ भूल कली संस्कृत के छाड़ी जाई पर्शियन क्लास रे बसे तेणु मते बहुत खराब लागिला I could not disregarded my teacher's affection तेणु मो टीचर को जो अफेक्शन रही छी मो टीचर को जो मो प्रति स्नेह श्रद्धा रही ताको मो केबे भी डिसरिगार्ड करिबिनी माने ताको केबे मु डिजोबे करिबि नाही टुडे I cannot but thank with graduated today I cannot जदि बा आज मु करि पारिनी but thank with gratitude of कृष्ण शंकर पांड्या जो सार को ना थला कृष्ण शंकर तेणु तांको प्रति मोर आज गभीर श्रद्धांजलि रही तांको प्रति आज मोर गभीर भक्ति रही gratitude of कृष्ण शंकर पांड्या for if I had not acquired the little Sanskrit जदि मु सेतरे टिके भी संस्कृत जदि न शिखि तांती if I had not acquired the little Sanskrit that I learnt then जोटा मु सेतले शिखितली that I learnt then I should have found it difficult to take any interest in our sacred books you know I should have found it difficult सेतले मु difficulty face करतांती मु problem face करतांती to take any interest कौन आग्रह ना टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सैक्रेड बुक्स आमर जो सैक्रेड बुक्स रही आमर जो होली बुक्स रही आमर जो धर्मग्रंथ रही आमर जो रिलीजियस बुक रही ताकू पढ़िया मोर इंटरेस्ट आसी न था थैंक्स टू पांड्या सर दैट ड्यू टू हिज टुडे आई हैव मच इंटरेस्ट टू आवर रिलीजियस बुक टू रीड आवर वेद वेदांत संस्कृत बुक्स ओनली फॉर हिम In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. तथापि कहूँ in fact, I deeply regret कि मुझे आज बहुत मनस्ताप करूँ I deeply regret that I was not able मु able हेली नहीं I don't have such ability मो पाखरे सेठी दक्षता हेला नहीं to acquire a more thorough knowledge तेणु संस्कृत ऊपर thorough knowledge gain करिवार ability मोर हेई पारलानी बा मु सेठी सक्षम हेली नहीं of the language तेणु language शिखिबा so that's all the topic. The topic ends with language, starts with one of his false notion by one of his false wrong work of reaching at school late and ends with of learning language. This is how the topic completed and through this topic Gandhiji has presented 2 or 3 examples of his during his school time. That's all.